नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया, जिसमें प्रधानमंत्री कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 1947 में भंग कर दिया गया होता तो देश आज कई संकटों से बच जाता। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी मिलने के बाद ये इच्छा जताई थी कि अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, क्योंकि इसका गठन ही भारत को ब्रिटेन की गुलामी से मुक्त करवाना था। खैर, ये बात तो इतिहास के पन्नों की है और इन्हीं इतिहास का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जब कांग्रेस ना होती तो क्या होता पर एक के बाद एक कई संभावनाएं गिना दी। अब पीएम की इन्हीं भाषण का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने दी है। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए आंकड़ों के अभाव वाली सरकार बता दिया। चिदम्बरम ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को नो डेटा अवेलेबल सरकार बता दिया। इसके लिए उन्होंने अलग अलग मुद्दों का हवाला भी दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने संसद में आंकड़ा ना होने की बात कही थी। इन मुद्दों पर चिदम्बरम ने पीएम मोदी को घेरा। सबसे पहले तो चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस को धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिसके कारण पीएम राज्यसभा में बोल पा रहे हैं, नहीं तो भारत सरकार के 1919 के कानून के अनुसार इसे काउंसिल ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। चिदम्बरम ने कहा, I am a member of the Tukde gang, which is the Hindi version of the word disruption. I'm not worried because in this honorable parliament a question was asked, who are the members of the Tukde gang? And the honorable minister said, we have no data available on the Tukde gang. इसके बाद उन्होंने जॉब वैकेंसीज के आंकड़ों का भी जिक्र किया और कहा, 31,321 there were 8,72,243 vacancies in the central government. 8,72,243 vacancies. And the almighty government of India recruited 78,264 persons to these vacancies, leaving nearly 8 lakh vacancies vacant as of today. इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, there is no data available on oxygen shortage deaths. There is no data available on the bodies flowing on the rivers. There is no data available on how many migrants walked back to their homes. There is no data available on doubling farmers' income, which should have been done in 2022. This is a no data available government, otherwise NDA government. इसके अलावा पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार को कई और मुद्दों पर भी घेरा। आइए आपको एक एक करके सब बताते हैं। राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर चिदम्बरम का तंज। चिदम्बरम ने राज्यसभा में बोलते हुए राजकोषीय घाटे का भी जिक्र किया और कहा, But I have some data, sir, and I want you and the Honorable House to look at this data. Last year, the Honorable Finance Minister projected the 21-22 fiscal deficit at 6.8%. I cautioned, saying it will not be contained in 6.8%. They said we'll do better than 6.8%. They've actually done better than 6.8. They have done 6.9. On this investment, the target was fixed as 1,75,000 crore. I caution that this will be indiscriminate disinvestment. This will be mindless disinvestment. इसके बाद चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि वो सरकार के आभारी हैं कि इस लक्ष्य में मात्र 78,000 करोड़ रुपए ही एकत्र किए गए। I'm grateful to the government for accepting our caution and collecting only 78,000 crore as against the target of 1,75,000. एयर इंडिया के लोन पर भी चिदम्बरम ने किया सवाल।
चिदम्बरम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एयर इंडिया के लोन पर भी सवाल उठाया और कहा, On capital expenditure, let's look at some very important data. In 21-22, the budget estimates projected capital expenditure as 5,54,236 crore. Because this budget also lays great emphasis on capital expenditure. That the government's capital expenditure will drive growth. Government's capital expenditure will crowd in private investment. I've seen a number of statements made by the Honorable Minister as well as her officers. So I think it's very important we look at capital expenditure. Now the budget estimate for 21-22 was 5,54,236 crore. But the revised estimate came as a pleasant surprise. It was 6,02,711 crore. I was pleasantly surprised until we get into the finer print and we found that the 6,02,711 includes a one-time debt payment of Air India of 51,971 crore. That is capital. That is not a capital expenditure. That is repaying the bank. And if you deduct that amount, it will be 5 lakhs. About 5,52,000 crore, which is less than the budget estimate. उन्होंने सवाल किया कि एयर इंडिया को दी गई राशि पूंजीगत व्यय कैसे हो सकती है। उन्होंने सरकार के पूर्व बजट में कुछ ट्रेनों के निजीकरण सहित कई घोषणाओं पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि इन संबंध में कुछ नहीं किया गया। चिदम्बरम ने समझाई कांग्रेस की 3W नीति। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री ने आगे कांग्रेस की 3W नीति को भी सदन के सामने रखा और कहा कि उनकी पार्टी की नीति 3W नीति पर आधारित है। पहला W का मतलब वर्क यानी काम, दूसरे W का मतलब वेलफेयर यानी कल्याण और तीसरे W का मतलब वेल्थ यानी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि हम संपत्ति के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वर्क यानी नौकरियां भी होनी चाहिए। सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और सरकार को हमें यानी संसद को यह बताना चाहिए कि कितनी नौकरियां अभी तक दी गई। My party has won, and we said so when we released the manifesto for 2019. It's based on 3 W's. The first W, work. The second W, welfare. The third W, wealth. We are not against the creation of wealth. Wealth must be created. But work, jobs must be created. Welfare must be promoted. इसके बाद आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने रोजगार को भी लेकर केंद्र सरकार को घेरा और तंजिया अंदाज में पकौड़े तलने का जिक्र भी किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट भाषण में गति शक्ति के जरिए 5 साल में 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई, यानी एक वर्ष में 12 लाख। उन्होंने कहा कि देश में हर वर्ष वर्क फोर्स में 47.5 लाख लोग नए जुड़ जाते हैं। उन्होंने पूछा, अगर केवल 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे तो बाकी लोग क्या पकौड़े तलेंगे? Now let's take jobs. I'm going to leave the others to my friends. Let's take jobs. We have a population of 139 crore people, of which the workforce is 94 crore. But the labor force participation rate, which is defined as a proportion of the total population, is 37.5%, which translates to 52 crore. Of the workforce, only 52 crore have some kind of a job, regular or irregular. The median age of India is 28.43. 50% of Indians are below the age of 28.43 and presumably looking for jobs. The government promised 2 crore jobs a year. They should report to us how many
jobs were created. According to the CMI's data on unemployment, which is the only reliable data, because the government does not put out data on unemployment anymore, urban unemployment this morning was 7.9%. Rural unemployment was 6.54%. And the budget speech had one statement about job creation, that through Gati Shakti and infrastructure, 60 lakh jobs will be created in 5 years. So that is about 12 lakh jobs a year. The annual addition to the labor force is 47.5 lakhs. If 47.5 lakh people are coming into the labor force, workforce every year, and you are creating 12 lakh jobs, what will the rest do? What will the rest do? The answer is very simple. They will fry and sell pakoras. इसके साथ ही चिदंबरम ने आखिर में कहा, यह सरकार गरीबों को भूल गई है। बजट में केवल 2 बार गरीब शब्द का इस्तेमाल किया गया, नौकरी शब्द का इस्तेमाल केवल 3 बार किया गया, एक नाम 6 बार लिया गया और फिर चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि वह अपने प्रधानमंत्री के प्रति निष्ठावान रहीं। इसके साथ ही साथ उन्होंने सरकार को आगाह भी किया, आप गरीबों को भूल गए किंतु गरीब आपको नहीं भूलेंगे, उनकी स्मृति बहुत लंबी होती है। Sir, this government has forgotten the poor. The word poor occurs twice in the budget. The word jobs occurs thrice in the budget. One name occurs 6 times, and I compliment the finance minister for being loyal to her prime minister. You have forgotten the poor. Let me end by saying, the poor will not forget you. The poor have long memories. तो सुना आपने, पी चिदंबरम ने राज्यसभा में बोलते हुए कई बिंदुओं पर आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।